So hello Aman, welcome to your Snap interview for operating system. Okay. So, my first question is, can you tell me something about paging? Can you explain what paging is? Yes, sir. So paging is a memory management a technique in which we divide the process into pages and brings it from secondary memory to primary memory. And and sir, paging is actually non-contiguous management technique. Okay. Okay. Can you explain why we use paging? Sir, because for we to eliminate two problems actually, sir. Nowadays, like for external, for reducing the mitigating the problem of external fragmentation, we use paging, and for sir increasing the degree of multi-programming as well. Nowadays, we are using paging. Okay. Okay. Sometimes we use multi-level paging also, right? Yes, sir. So what's the issue with paging that we have to move on to multi-level paging? Sir, when we create a like page table for a process, so when the size of the process, size of the page table is more than the size of one single frame, then we have to like store it in multiple frames. So to like uh, uh, to manage this thing, we have to create one more page table. So Okay. this way, and we keep this till that page table comes into like one single page. One single frame. Okay. Okay. Can you tell me what are the four conditions you require to achieve synchronization? Okay, sir. For synchronization, sir, can you please elaborate a bit, like four conditions? I'm not like able to. Like there are some conditions that some requirements that you need to fulfill. By fulfilling those requirements, you can say that synchronization has been achieved, or these are the requirements that you need to fulfill. Okay, sir. So I'll give you a hint, like okay. mutual exclusion and all. Yes, sir. Okay. So, sir, four conditions are, sir, mutual exclusion should be there, Okay. and that no preemption, and golden weight and circular weight. I think you are confusing these conditions with deadlock. Yes, sir. So I'm not able to recall that. Okay. It is mutual exclusion, progress, bound weight, and hardware. Okay, sir. Actually, sir, for inter-process communication, I have to like revise. Actually, I haven't revised in Okay. IPC. Have you studied Peterson's algorithm in synchronization? Yes, sir. I have studied, but IPC part is like today I'm not able to like revise. So Okay. Okay. Can you explain what thrashing is? yes, sir. So like for every memory access, if we are getting like page faults for so then our CPU is like not doing useful work. It's just the degrading the performance of our CPU. So this condition is known as thrashing. Okay. Okay. Can you tell me what Baladi's anomaly is? Okay, sir. So in Baladi's anomaly, so whenever we for a single for a process, whenever we allocate frames to that process, so generally what happens is when we increase the number of frames, then that page faults is page fault is like gets reduced. But in Baladi's anomaly, like in case of FIFO, so if we even if we increase that frame number, then also it would happen that page fault may increase. So this condition is like Baladi's anomaly. Okay. Can And you tell me some differences between user level threads and kernel level threads?
Sir, user level threads and kernel level threads, actually the difference is, sir, this context switching time is more in kernel level threads, and it is less in user level threads. And right now I can recall this only, sir. Okay. So yeah. Okay. There are some memory allocation techniques like contiguous Yes. and non-contiguous, right? Yes, sir. In contiguous, there is variable partition and you know the other one, and in contiguous we use paging and all. Can you tell me what are the types of fragmentation that you face in these memory allocations, in all of them? Yes, sir. So we can face like two types of fragmentation: internal fragmentation and external fragmentation. So internal fragmentation is when like we have a frame, the partition size is like 4 MB, and the process size is 2 MB. So, and we put that process in that partition, then 2 MB that space is like unused. So that is internal fragmentation. And for external fragmentation, if we like, for there are many partitions, and we have like allocated like 4 processes to be these partitions, but 1 MB like space is unutilized in that. So that is external fragmentation, because we cannot allocate 4 MB process even if we have that 4 MB space free. Okay. Can you tell me what type of fragmentation does variable partition suffers from? Okay, sir. So in variable partitioning, so it is like, sir, different from dynamic partition, right? Am I getting correct? Sorry? Sir, okay, sir. So in variable partitioning, yeah. The example that you mentioned, that there is 1 MB left in each. Yes. It is fixed size partitioning. Yes. And the other one where you have a one single block, and as like in the order when the processes will come, it will keep on dividing that whole block into. Okay, sir. So so first one I'm asking, what is the type of fragmentation that you suffer in fixed partitioning? So in fixed partitioning, we suffer from both from internal fragmentation and external fragmentation. Okay, and in variable size? So in variable size, like we used to suffer from external fragmentation, sir. Okay. Then we move to paging. What is the type of fragmentation that we suffer in paging? So so in paging we might face the internal fragmentation in the last page. And in the last page. And what is the like what you normally take the value of internal fragmentation? Like what amount of internal fragmentation is there? Sir, we can take that on an average half page. Okay. And what about segmentation? Sir, in segmentation, like in paging, we have a page table corresponding to one process. So, but in segmentation, we first divide that one process into segments based on the user convenience. And after that, corresponding to each and every segment, we have different page tables, and after that, to make like manage those page tables, we again make one segment table. And what type of fragmentation? Sorry, I didn't. I guess you. What type of segmentation? Sorry, what type of fragmentation that segmentation suffers from? Sir, it suffers from external fragmentation. I think both actually, sir. Okay, it just suffers from external fragmentation. Okay, sir. Okay, can you let's say that there has been a deadlock. Yes, sir. What are the ways in which you can recover from that deadlock? Like what you can do to the processes, or what you can do to the resources in order to come out of the deadlock? Sir, we can preempt the resources. We can pull out the resources. And how will you decide which resources you are going to pull out? Sir, that is the challenging part of that. Like, so
to pull out the What are resource. the criteria that you can, use in order to decide? Okay, so to pull out the resource, Okay, can you decide on the basis of process? yes, sir. On the basis of process, yeah. Okay, so let's say that you want to preempt some process Okay. in order to come out of the deadlock. Okay. What are the criteria that you will use to select any process, that which process you are going to preempt? Okay, sir. So to preempt the process, we can select the process like which has done a very less amount of work. We can Okay. preempt that process, and based on the importance of the like priority of that process, Priority of the we can process. preempt Okay. it. And And that if we based on that, like if whether it is system process or user process, also we can preempt okay. like user process. Okay. Last question is, Okay. what is ostrich algorithm? So okay, sir. So ostrich algorithm is like deadlock. There is a scheme which is known as deadlock ignorance actually, sir. Okay. So in this, we ignore the deadlock actually, and like most of the because handling the deadlocks is like very tedious kind of, and we have to suffer like in terms of performance. So we used to ignore like many. It is the most popular approach. What is its relation with ostrich? Like why? Yeah, sir. Yeah. Okay. So like whenever there is some anything wrong is going to happen, and it like ostrich fears actually. So then ostrich used to put his head under the sand. So this way he thinks that he has like, yeah, right. It was just a simple question, just to so let me give you your feedback. So अमन, पहला ऐसा है कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ सर. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इंटरव्यू चाहता है कि वो आपको ग्रिल करे, तो सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब पेजिंग भी है किसी अमाउंट तक, बट सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वो अंदर तक काफी घुस सकता है. तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन की वो रहती है कि सिंक्रोनाइजेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट, सिंक्रोनाइजेशन ही तो सारा कुछ नहीं है. ठीक है, पेजिंग में अगर वो ज्यादा घुसेगा भी तो पेजिंग इतना टफ नहीं होता है. पेजिंग इज लाइक अगर आपने एक बार समझ लिया तो ठीक है, डन हो गया, आ गया आपको. बट सिंक्रोनाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसमें आपको वो फंसा सकता है, तो इसीलिए उसमें क्वेश्चन बहुत पुट होते हैं. तो अगर आप वो प्रिपेयर नहीं करके जाओगे तो वो फिर आपका पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने का कोई यूज नहीं है. ओके सर. तो उस पर ध्यान देना है. दूसरा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे से आंसर करें. ठीक है, लाइक बहुत ही टेक्निकली मतलब साउंड थे आप, कि अगर ऐसा नहीं है कि आप लेमन टर्म्स में बोल रहे हो कि, और इसी चीज को कंटिन्यू करना है कि कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो यू शुड साउंड टेक्निकल, कि कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज करना है, ऐसे लेमन टर्म्स में नहीं, बहुत अच्छे से ऐसे. सॉरी, आर यू एबल टू हियर मी? Yes sir, now it was one question that you were not able to answer that much technically, though it was right up to some extent, but it was a technical term. So that question was thrashing. Okay. So thrashing को ये बोलना है कि sometime what is our main purpose? To increase the degree of multi-programming. Yes, sometimes in order to increase the multi-programming हम इतने ज्यादा प्रोसेस अंदर ले आते हैं कि वो एक बेल कर्व बनता है. उस कर्व पे फिर एक थ्रेशोल्ड पे जाके इतने सारे प्रोसेस अंदर आ जाते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो हर टाइम सिर्फ पेज फॉल्ट ही अकर होता रहता है और वो पेज रिप्लेसमेंट करता रहता है. तो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेसेस, वो बस क्या करता रहता है, प्रोसेस को स्वैप करता रहता है. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो, तो उसके चक्कर में हम बहुत सारी ले गए थे. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ेगी. अब जस्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत सारी वो पेज फॉल्ट होते रहेंगे. वो मतलब हाँ, पेज फॉल्ट होते हैं, इसीलिए थ्रेशिंग, उसको थ्रेशिंग कहते हैं जब बहुत सारे पेज फॉल्ट होते हैं. बट वो क्यों होता है, और वो क्यों होता है उसके लिए हमने ऐसा क्या करा कि वो क्यों हुआ. हमें मल्टी प्रोग्रामिंग ज्यादा चाहिए थी, तो हमने और प्रोसेसेस लाए, उसकी वजह से थ्रेशिंग. तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट प्रॉपरली.
ठीक है। ओके सर। एक और आपका था यूजर लेवल, कर्नल लेवल, थोड़ा पढ़ लो, बेसिक सा थ्योरेटिकल हाँ क्वेश्चन है। सर, ऐसा हाँ क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो वो फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए। बहुत ही हाँ बेसिक सा क्वेश्चन है, यूजर लेवल है, उसके बारे में कर्नल को नहीं पता होता है, कर्नल को कर्नल लेवल के बारे में हाँ पता सर, होता है। वो मैं एक रिकॉल। एक अगर थ्रेड ब्लॉक हो जाए यूजर लेवल का तो सभी ब्लॉक हो जाएंगे, कर्नल का हाँ एक हो जाए तो बाकी इंडिपेंडेंट चलते रहेंगे। कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम सर, बहुत ज्यादा होता है कर्नल में, क्योंकि कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है। वॉइस इज आपसे पूछ रहा है ब्रेकिंग तो है ये बट। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आई एम सेइंग कि ऐसे क्वेश्चंस पे आपका मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ओके क्यों? सर। क्योंकि ये बोनस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके सर। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि कहाँ सिंक्रोनाइजेशन में वो एकदम पीटरसन एल्गोरिदम में घुस जाएगा, हाँ कहाँ सर। यूजर लेवल कर्नल लेवल थ्रेड पूछ रहा है। तो वो तो फ्री के मार्क्स है ना, एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो ऐसी चीजों को छोड़ के मत जाना, ओके पढ़ सर। जाना थोड़ा बहुत, तो बहुत बेसिक। एक और मैंने पूछा आपसे, प्रोसेस कैसे प्रीएम्प्ट करोगे। हाँ सर। तो उसमें आपने एक दो बोले थे कि एक तो एग्जीक्यूशन, एक प्रायोरिटी। हाँ एक होता है, एक ये भी होता है कि अगर कोई प्रोसेस 10 रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहा है हाँ और एक प्रोसेस 2 रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो 10 वाले को प्रीएम्प्ट करोगे ना, हाँ सर। रिक्वेस्ट के बेसिस पे। दूसरा ये कि अगर कोई प्रोसेस 10 प्रोसेसेस को होल्ड करके बैठा है, रिसोर्सेज को, और हाँ एक 2 रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठा है, तो 2 वाले को अगर प्रीएम्प्ट करोगे तो फायदा तो होने नहीं वाला, तो 10 वाले को प्रीएम्प्ट करोगे। तो एक लॉजिक ये भी होता है। तो ओके ये सर। छोटे छोटे बेसिक से हैं। तो ये बाकी आपका जितना मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन, चलो जो उसका बड़ा पार्ट था वो आपने बोल दिया कि आपका वो प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ उसके अलावा जो था बाकी सारा सेटिस्फैक्टरी था। बट एक बार आपको सिंक्रोनाइजेशन पढ़ के एक बार और स्नैप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि एक बार बस थोड़ा हाँ सर। मेंटल उसके हो जाए कि एक मेंटल बूस्ट हो जाता है कि हाँ ये सब्जेक्ट डन है हमारा। ठीक है, सर तो एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिपेयर करके यू हैव टू गिव वन मोर स्नैप विद मी फॉर दिस सब्जेक्ट। वो आप जिस दिन भी देना चाहो दे सकते हो। सो थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। ओके।